Hello, dear students. Welcome back to a news channel. Students, have you ever wondered how judges are appointed and how they are transferred in India? And recently, this is also in the news article like what is collegial system and why are there's why it is in news recently. And finally, we are also going to talk about a major breakthrough. Okay, so scientists, what they are doing, they have basically decoding uh, tuberculosis at the genetic level, okay, at the genes level. So get ready because we are about to dive deep into these topics. And let's start with the best, or you can say the news article that is the story of the week. So, a high profile case has emerged, and this involved Justice Yashwant Verma from Delhi High Court. Okay, so Supreme Court Collegium. Supreme will understand later on like what exactly is collegium. So Supreme Court Collegium has recommended transferring him, transferring Justice Yashwant Verma from Delhi High Court to Allahabad. And this decision comes just as an inquiry is beginning into allegations of burnt currency, which is found in storeroom at his official residence. Okay, so some, but what does this mean? And is this uh, is this transfer a sort of punishment? And what exactly is collegium system? तो सबसे पहले हम कोलेजियम सिस्टम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा. तो students, collegium system is basically, it's a body, it's an organization of senior judges. Okay, it's a body of senior judges that decides which judge get appointed or transferred in India. Okay, तो एक बेसिकली ग्रुप है जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो जजेस होंगे वो कौन कौन जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, उनको कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा. तो ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? कोलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और इसमें इसके मेंबर कौन होते हैं? सीनियर जजेस. ओके, तो सीनियर जजेस मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन जज अपॉइंट किया जाना चाहिए, किसी को किसको ट्रांसफर करना है. एंड इट ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Okay, Chief Justice of India, and CGI and four senior most Supreme Court judges. Four senior most Supreme Court judges. Okay, so they recommend transfers, appointments, and government usually follow their advice, है ना. गवर्नमेंट उसकी जो उनकी जो एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो कर लेती है. अब ये जो ट्रेडिशन है ये कैसे स्टैब्लिश हुआ है? Is it mentioned in the constitution? Students, this system of appointing judges was established through a series of landmark cases known as the three judges case. Okay, and this ensured that the judiciary and not the government has final say in selecting judges, and this is done to maintain the independence of the judiciary. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है. थ्री जजेस केसेस से ये इमर्ज हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी कि किस जज को अपॉइंट किया जाएगा, बल्कि ये जो फाइनल से होगा वो किसका होगा? जुडिशरी का ही होगा. एंड दिस इज डन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो क्या होगा? कि किसी भी कंट्री का लीगल सिस्टम अफेक्टिवली फंक्शन नहीं करेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई जस्टिस वर्मा बीइंग ट्रांसफर्ड. See, Justice Verma's official residence in Delhi became the center of controversy when storeroom was found to contain sacks of burnt currency. Okay, so Supreme Court
then appointed a committee to basically investigate this matter. And collegium system, this the Supreme Court collegium has recommended his transfer to the Allahabad High Court, calling it an uh, independent decision in the interest of justice. Now, this means the move is meant to separate the ongoing inquiry from his judicial work. However, the legal community is debating whether this transfer is necessary or if it is an attempt to remove him from the public eye. ओके, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी चल रही है। और क्योंकि ये सारी इवेंट्स हुए हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि कहीं ये ट्रांसफर एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट तो नहीं है। Now, while we know that collegium system gives judiciary the power to appoint judges, and this is the biggest part, right? But it has some problems as well. So there are certain criticism being made against the collegium system. First is that there is a lack of transparency. See, the decisions are being made behind closed doors. अब वहां पे ट्रांसपेरेंसी कम है क्योंकि कोलेजियम सिस्टम में बोल दिया कि एक जज है उसको अपॉइंट किया जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर जज है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन किस बेसिस पे हो रहा है उसको क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं है। ओके, एंड secondly, it is also overburdening senior judges because they have to check the background of each judge who is being appointed or transferred. तो सीनियर जजेस का काम, वैसे ही जजेस का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी कोलेजियम सिस्टम से भी और उनका फर्दर काम इंक्रीज हो जाता है। मोर ओवर, देर इज नो क्लियर प्रोसेस फॉर अकाउंटेबिलिटी। ओके, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट्स अनक्लियर हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा ये भी अनक्लियर है। So there have been calls for reforms, and some even made a suggestion that the views of consulted judges should be in writing, and that non-compliance should make the Chief Justice's choice non-binding. But for now, the system remains as it is. अभी तो system ऐसा ही है जैसा चल रहा है, बाद में देखते हैं क्या होगा। ओके, तो अब ये सारा इशू है, ये सारा जो मुद्दा है वो चल रहा है। जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ फॉर यू, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज कोलिजियम सिस्टम एंड व्हाट इज इट्स रोल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टुडे। It's regarding tuberculosis. Okay, so you might have heard of tuberculosis or TB, है ना? Uh, क्या है basically? It's an infectious disease that mainly affects the lungs and it's spread through the air. एयर से स्प्रेड होता है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। एंड इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस इन द होल वर्ल्ड। इंडिया में हाईएस्ट नंबर है। बट हेयर्स द एक्साइटिंग पार्ट, साइंटिस्ट आर यूजिंग genome sequencing. Yes, they are using genome sequencing to study TB bacteria and find better treatments. And this project is called Dare to Era DTB. And it has recently completed sequencing 10,000 TB samples. Okay? तो 10,000 कंप्लीट भी कर लिया। अब जीनोम सिक्वेंसिंग है क्या? ऑल्दो वी हैव कवर्ड दिस मेनी टाइम्स, but those who have joined recently, genome sequencing is like reading the instruction manual of bacteria. Okay, बैक्टीरिया की इंस्ट्रक्शन मैनुअल को रीड करना जैसा है। So it helps scientists understand how bacteria survive, how they evolve, and why in some cases they resist antibiotics, that is their medicine. So by sequencing the genome of TB bacteria, researchers can figure out why some strains are drug resistant and how to fight them in a better way. तो कैसे उनका जो स्ट्रेन है वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है, why some bacteria turn into drug resistant, and how
we could fight them in a better way. Now, why is this important? Why this sequencing is important? See, out of the 10,000 samples sequenced, 7% is 7% are said to be resistant to a single drug. Okay, so that means normal TB medicine wouldn't work on them. And India has already set a target to eliminate TB by 2025. तो इंडिया ने वैसे ही टारगेट सेट कर रखा है कि बाय 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे. एंड दिस is exactly 5 years ahead of the World Health Organization goal of 2030. तो WHO ने सेट किया है गोल कि बाय 2030 वी गोना एलिमिनेट टीबी, लेकिन इंडिया ने 5 years पहले ही वो टारगेट सेट कर रखा है. बट टू एलिमिनेट टीबी वी नीड बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स, वी नीड मेडिसिन एंड ऑल्सो अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि कई बार होता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको टीबी है, right? So we also need awareness campaigns. And one of the biggest problems is that TB spreads to people who don't even know they have it. They don't even know, they don't even realize that I have TB. And many people, they carry latent latent TB. They carry latent TB, meaning the bacteria are in their body, but they but it is not making them sick yet. It's already there. ठीक है, सिम्टम्स अभी शो होना स्टार्ट नहीं हुआ है. ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई डिजीज होगी, अगर मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स. लेकिन अगर सिम्टम्स शो ही नहीं होंगे तो आई वुडंट रियलाइज कि आई हैव अ बैक्टीरिया, राइट? And if their immune system weakens, TB can become active and contagious. तो टीबी कब एक्टिव हो जाता है? उन लेटेंट टीबी कैरिंग लोगों में टीबी कब एक्टिव हो जाता है? When their immune system weakens. The doctors also face challenges in diagnosing drug resistant TB quickly. Okay, and right now it can take up to 3 weeks. Yes, 3 weeks to confirm if someone has TB or not. And scientists hope that with genome sequencing, at least this process can be reduced to just a few days. Okay. Now the question is, how can you stay safe from TB? See, TB spreads through the air. So there are some ways you can protect yourself, like covering your mouth when coughing or sneezing, ensuring that there's a proper ventilation in closed spaces or not, and also get tested if someone is having a persistent cough, fever, or weight loss. Okay, if someone is having a persistent cough, fever, or weight loss, they need to get tested for TB. So by spreading awareness and using scientific advancements, we can move closer to a TB free world. Wow, we have covered a lot today. तो क्या क्या हमने पढ़ा, आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. सो फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर, है ना. फिर थोड़ा सा जस्टिस यशवंत वर्मा केस जो है वो चल रहा है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा. एंड while collegium system is powerful, but it has criticism regarding transparency and accountability. And then इंडिया की जो फाइट है अगेंस्ट टीबी बाय सीक्वेंसिंग 10,000 टीबी जीनोम्स and helping us understand drug resistance in a better way. So we also learned that and why TB is a major health issue. Okay, students, remember, understanding news isn't just about knowing what's happening. It's about understanding why it matters and how it affects society. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ लो कि हाँ ठीक है चलो अभी हम न्यूज़ से अपडेटेड है. नो, इट्स अबाउट व्हाई इट इज हैपनिंग,
how it is affecting society or the area where I am living in. So उसका एक इम्पैक्ट क्या है, उसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. All right. So that's all for today, students. Don't forget to share this episode with your friends and tune in next time for more insightful discussions. Stay curious, stay informed. Bye bye.